Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist. And you're watching Dr. KK's Med Talks with Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन-स्टॉप शो का 928वां 928th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. Now, air quality in Delhi and across the world across the country has worsened significantly. And in Delhi today, AQI, Air Quality Index, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है. That has reached to 421. Even in Karnal, where I live, जिसे हम बहुत साफ सुथरा शहर मानते हैं, our AQI is hovering around 323 today. Mumbai is also suffering from poor air quality. 78% of families in Mumbai have one or more than one family member with sore throat or cough, according to a recent survey. According to clinical experts, poor air quality can have detrimental effects not only on the chest, on diabetes, on heart disease, but also on the mental development of children, and it can promote Alzheimer's disease in adults. तो हमारा दिमाग या दिमागी ताकत ये भी कम होता है with air quality, with air pollution. And doctors recommend gargles of warm saline and diluted betadine. So betadine को warm saline में dilute करके आप gargles कर सकते हैं, और betadine के साथ this helps reduce throat irritation and also reduces the risk of viral and secondary bacterial infections, which are so common in these polluted times. And IIT Kanpur has suggested artificial rain for New Delhi as a means of reducing the air pollution. So with these interesting headlines, let's see what our topic is for today. Our topic is even more interesting. Topic आज का देखते हैं अपना. एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, हमारी हेडलाइंस इंटरेस्टिंग थी, हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग है उससे भी ज्यादा. तो हमारे जो स्पीकर हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो तो बिल्कुल कैंट हो गए. अब कैंट का मतलब क्या होता है? एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर वितुल गुप्ता. वार्म वेलकम सर. Thank you very much. Welcome sir. Thank you. Dr. Gupta, Professor Vitull Gupta is a distinguished medical professional with a wealth of qualifications and extensive experience. An MD in medicine, and he has fellowship of all the prestigious associations. He is FICP, FCSI, FACP, and FIACM. He stands as a beacon of hope, and he is a leader in the medical profession in Bhatinda, in the Malwa region of Punjab. A consultant at the Kishori Ram Hospital and Diabetes Care Center. He has brought the entire country, the entire world to Bhatinda by single-handedly starting and nurturing medical education, medical continuing education in the Malwa region of Punjab. So he has brought the entire country to Bhatinda, and he has taken Bhatinda to the entire country. And what he is doing with us today, Dr. Sahab, thank you so much for your time, your expertise. पर सब तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, कैंट ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ. ਘੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਬੰਦਾ, who doesn't fear anything. So that is a Punjabi word. Typical Punjabi word. Yes, so Kant is a Punjabi word which means unique. Maybe in Eastern UP Hindi, ढिंचुक. And मतलब उसका मुकाबला नहीं है कोई. And sir is actually national convener of the Pollution Council for the Cardiology Society of India. So सर ने जो जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली है, that is to spread awareness about pollution and its ill effects across the country. Sir, warm welcome once again. आपको गुड इवनिंग आ रही है फ्रॉम डॉक्टर रमेश पाल सिंह पवार सर. सर इज 73-year young pediatrician from Western UP. डॉक्टर सिद्धार्थ डांगर जो अराउंड 30-year young physician हैं, and डॉक्टर साहब diabetologist हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ, and we are very proud of him because one thing we learned from Dr. Siddharth is that you keep on learning, you keep on educating yourself. And Siddharth, I'd like to say to you कि ये चीज जो मैंने सीखी है, मैंने डॉक्टर वितुल गुप्ता से सीखी है. You keep on educating yourself. इल्म मतलब एजुकेशन या विजडम, वो आप हर जगह से ढूंढें, हर संभव तरीके से ढूंढें. सो वेलकम सिद्धार्थ. एंड क्वेश्चन सर फर्स्ट आ रहा है कि आपने टॉपिक चुना एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ,
तो ये क्यों चुना सर आपने टॉपिक? So, Dr. Kalra, with the very beginning, you have asked a very pertinent question because when we were students, air pollution and health was not a topic at all. And 20 years back, I think more and more pollution was there as humankind is indulging in all creating all the type of pollutions, so it is affecting our body also. So more and more evidence started generating that pollution is affecting our health. So that is why now the CSI, Cardiology Society of India, is the first society in India to gauge this issue sensitively, so that they have a council specifically to look for pollution and cardiovascular health. So that is why I chose this topic, to make people aware that pollution is not a minor thing. It is affecting our health like never before. It is affecting each and every part of the body from hair to toe. It is affecting every organ. So in subsequent conversation, we are going to dwell how this pollution, especially air pollution, is affecting our health. That is why I chose this topic. Thank you, sir. It is really pertinent and very timely because all of us are facing the ill effects. जैसे हमने आज गाइडलाइंस में देखा, अकेले दिल्ली या हरियाणा पंजाब में नहीं, इवन बॉम्बे तक, मतलब हर जगह पोल्यूशन फैली हुई है। सर, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर एयर पोल्यूशन हो तो खांसी होगी, नज़ला हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकती है। बट आप तो कार्डियोलॉजी सोसाइटी वाले हैं, तो व्हाट डज एयर पोल्यूशन हैव टू प्ले विद heart health? Heart health is one of the organ where heart is one of the organ in the body where air pollution is affecting. In India, pollution is often severe and worsen in some places, and proportion of death from CVDs are attributed to pollution substantially. Now, epidemiological studies have established a consistent increased risk of CV events with long term and short term exposure to air pollutants. Previously, we were thinking that air pollution is only affecting our lungs, eyes, etc. But now it has come out to be an important cardiovascular risk factor also. So it can have short term effects, which increases the incidence of heart attack, stroke, and death from CVD. It increases the incidence and hospitalization for heart failure. It increases arrhythmias, atrial fibrillation. So it is affecting almost all diseases pertaining to cardiovascular system. And acutely, it can increase your blood pressure also. So long term and short term effects are there, which are very, very dangerous pertaining to heart. So it is again outdoor pollution as we are encountering in northern India. So there is smoke everywhere, no sun at all. So it causes acute increase in blood pressure, incidence of heart attack, and long term implications are also there: heart failure, hospitalization. So all heart diseases, we call it as cardiovascular diseases, increase with air pollution. तो सर, एक मैसेज तो आप दे रहे हैं कि एयर पोल्यूशन से एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व फ्रॉम हेड टू टो, एंड दूसरा मैसेज जो दे रहे हैं आप वो ये है कि इवन विद इन एन ऑर्गन सिस्टम लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हार्ट, उसमें भी अलग अलग तरह की बीमारियां, हार्ट अटैक, अधरंग, अरिथमिया या दिल की धड़कन में गड़बड़ और सडन राइज इन ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें होती हैं। बिल्कुल जी। सर, ये सब हो क्यों रहा है? व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग? एंड दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मैडम जुलेखा आरा जी। अरुणा त्यागी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, कृष्णा कुमार जी भी आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं, एंड वो कहते हैं सर व्हाट आर द रीजंस फॉर ऑल दिस? ये सब हो क्यों रहा है? पॉल्यूशन आपको पता है कि दो तरीके का होता है। वन इज इट इज रिलेटेड टू द गैसेस, अदर इट इज रिलेटेड टू द पार्टिकुलेट मैटर। हम इसको पीएम बोलते हैं, नॉट प्राइम मिनिस्टर। पार्टिकुलेट मैटर विच वी क्लासीफाई, जिसको हम बोलते हैं कि 2.5 है, 10 है, नैनो पार्टिकल्स हैं। सो ये जब अफेक्ट करते हैं, लाइक एयर पोल्यूशन, टॉक्सिक मेटल्स, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग द हार्ट।
हार्ट को कैसे इफेक्ट करते हैं, देयर इज डाइवर्स मैकेनिज्म्स, अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं जिसमें स्पाज्म है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन है। सो ये सारे मिलके जो हार्ट की आर्टरीज हैं या हमारा हार्ट का सिस्टम है, which is also affecting the endocrine system also. So these are the mechanisms which are affecting the heart, which is very complex and varied. इंडिया में इतनी स्टडीज नहीं हुई हैं इसके कारण कि क्या है, इन्फ्लामेशन है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूरल एक्सेस है। सो दीज आर ऑल अफेक्टिंग द हार्ट, लीडिंग टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इन चारों चीजों को एक-एक करके एक्सप्लेन करते हैं सर, जो आपने बोली और इतनी सरलता इतनी आसानी के साथ आपने बोला। सो लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। पहले तो सर ने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट या ऑक्सीडेंट इफेक्ट या फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो जब एयर पोल्यूशन होती है, पोल्यूशन हमारे आसपास होती है, ये हमारी बॉडी की कोशिकाओं में जाके ऐसे केमिकल्स क्रिएट होते हैं, ऑक्सीडेंट केमिकल्स या फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को बूढ़ा करते हैं, बुजुर्ग बनाते हैं, जल्दी प्रीमेच्योर एजिंग करते हैं। एंड हमारी बॉडी बनती है फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ वेरियस सेल्स। तो अगर हर एक सेल, हर एक कोशिका बूढ़ी होती जाए या थकना शुरू कर दे, इट बिगिंस फाइटिंग पोल्यूशन एंड गेट्स टायर्ड वेरी फास्ट, तो पूरी बॉडी जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। सो दैट एक्चुअली लीड्स टू मोर डिजीज, मोर अर्ली डेथ। दूसरा सर ने बात की अबाउट स्पैज़म। तो सर जब ये फाइन पार्टिकल्स इनहेल करते हैं या ये हमारे ब्लड में भी जाते हैं अलग-अलग केमिकल्स के रूप में, तो व्हाट इज़ वेज़ोस्पैज़म? कैन यू एक्सप्लेन टू अस क्या होता है खून की नसों में और उससे दिक्कत क्या आती है? या वेजोस्पैज्म, अगेन वेजोस्पैज्म है नाड़ी का सिकुड़ना। जैसे नाड़ी का डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, समथिंग हैपेंस, कुछ भी होने के कारण उसका जो डायामीटर है वो आधा सेंटीमीटर रह जाता है, जिसको हम स्पाज्म बोलते हैं। तो स्पाज्म के भी 2 मैकेनिज्म हैं। एक तो जो हमने पीएम 2.5 है वो नैनो पार्टिकल है, उसका हम साइज देखें तो हेयर जो बाल के साइज से 100 गुना कम है वो। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब हम वो इनहेल करते हैं तो नैनो पार्टिकल या फाइन पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली लंग से होके वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं। सो जब ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं तो वो हार्ट में भी पहुंचते हैं। जब हार्ट में पहुंचते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्शन, वन इज डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट एक्शन के कारण वो नाड़ी में सिकुड़न पैदा करता है। और दूसरे जो गैसेस हैं, गैसेस भी हमारे अंदर जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये गैसेस भी जब अंदर जाती हैं तो ये वेजोस्पाज्म पैदा करते हैं। तो जब वेजोस्पाज्म होता है तो हार्ट में खून की कमी हो जाती है। सो वंस पेशेंट इज एक्सरसाइजिंग, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, हमारे हार्ट को ज्यादा ब्लड चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और ऊपर से पॉल्यूशन हम जब इनहेल करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शन, वो नाड़ी और सिकुड़ जाती है। जब नाड़ी सिकुड़ जाती है तो और खून कम हो जाता है, जिससे अगर पेशेंट को पहले से कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उसकी। अगर पहले से नई प्रॉब्लम है तो नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जिसमें हार्ट अटैक, और जैसे आपने बताया कि दिल की धड़कन में गड़बड़ी हो सकती है, एरिथमियाज बोलते हैं, उसके कारण पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है। सो दैट इज हाउ वेजोस्पाज्म का पैथोमैकेनिज्म जो एक्सप्लेन किया हुआ है स्टडीज में, तो उसके कारण हमको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जब हम प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे तो हम इस इन चीजों से बचने के लिए एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल, पर्सनल एज वेल एज कम्युनिटी बेस्ड डिस्कस करेंगे। हाँ जी। So we acknowledge the question from Sahil Stephen, who asks how we can reduce our personal contribution, and we'll come to that in a short while, Sahil. सर आपको बिमला कपूर मैडम गुड इवनिंग कर रही हैं, सलोनी राणा जी ग्रीट गुड कर रही हैं। इवनिंग। गुड इवनिंग। सुमित कुमार का क्वेश्चन वाकई जायज है, एयर पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्शन, सो वील कम टू दैट सुमित शॉर्टली। जय यदुवंशी जी शेयर करते हैं कि रुद्रपुर में इन उत्तराखंड, वहां पे AQI 164 है, वहां पे भी हाई है सर। जब अदरवाइज हम सोचेंगे उत्तराखंड इज अ लेस पोल्यूटेड और एन अनपोल्यूटेड स्टेट। सर एक नहीं, टॉपिक तो था हमारा, हाँ, ऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल रिलीज। दूसरा था वेजोस्पैज्म जैसे आपने बताया। तीसरा एक आपने शब्द इस्तेमाल किया, एक लफ्ज इस्तेमाल किया, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। सो व्हाट इज द एंडोथेलियम? और जब एंडोथेलियम
को कहा जाता है दैट दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये क्यों कहा जाता है? इसकी अहमियत क्या है इन मेंटेनिंग हेल्थ? व्हाट डज एयर पोल्यूशन डू टू द एंडोथेलियम? सो जो एंडोथेलियम है वो अंदर की लाइनिंग को हम एंडोथेलियम बोलते हैं। जो जो अंदर की लाइनिंग है उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। जैसे सारे सरफेस को आर्टरीज के, वेन्स के और उनको जो लाइन करता है, अंदरूनी लाइनिंग को हम एंडोथेलियम बोलते हैं। सो एंडोथेलियम का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ देर इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन तो उसमें डिसरप्शन हो जाती है। तो जो जोड़ है उनके, दैट दैट गेट्स डिसकनेक्टेड। और जहां पे एंडोथेलियल डिसफंक्शन होएगा वहां पे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। सो दैट विल कॉज थ्रोम्बोसिस इन ए शॉर्ट, मतलब इन ए immediate problem, and long term it will cause atherosclerotic plaque. So endothelial dysfunction again is because of both the PM 2.5 से लेस होता है, वो डायरेक्ट चला जाता है। तो और गैसेस की वजह से देर इज डिसरप्शन इन द एंडोथेलियम विच कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस अगर इमीडिएट हो तो अगेन मायोकार्डियल इन्फाक्शन और हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, उसके कारण हो जाएगा। सो एंडोथेलियल डिसफंक्शन विल डिसरप्ट, उसमें वेजोडायलिटेशन कम हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन जैसे स्पाज्म किया वो हम कंसिडर करते हैं। और सेल की प्रोलिफिकेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो दीज ऑल लीड टू collective endothelial dysfunction and increase in heart problems. एंडोथेलियम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम में से जो लोग कुकिंग करते हैं, अगर आपके पास कोई नॉन स्टिकी पैन है, नॉन स्टिकिंग पैन जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं, तो जो टेफलॉन की कोटिंग है आपके पैन की, दैट इज लाइक द एंडोथेलियम। अब अगर वो Yes. खराब हो जाए, उसमें आप कुकिंग करना शुरू करें, तो आपकी सब्जी वहां जम जाएगी, सब्जी सड़ जाएगी। और अकेले वो वाला हिस्सा नहीं सड़ेगा सब्जी का या आलू का, आसपास वाली सब्जी का भी टेस्ट खराब हो जाएगा। सो दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। Yes, excellent example, Dr. Kalra. एंड अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो नॉन स्टिकी पैन तो चलो दैट इज अ नॉन लाइव थिंग, बट मान लो आपके पास एक टमाटर है, अब उसकी भी लाइनिंग है, थोड़ा सा हिस्सा गल गया आपके टमाटर का, अगर आप उसको नहीं काटेंगे या नहीं ठीक करेंगे, वो आगे फैलता जाएगा और पूरा टमाटर जो है या पूरा सेब जो है वो खराब हो जाएगा। इस तरह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन के साथ पूरी बॉडी में दिक्कत आती है। सर ने चौथी एक चीज बोली थी अबाउट हार्मोन्स। तो सर ये जब एयर पोल्यूशन आती है और हम सांस लेते हैं, तो अवर बॉडी परसीव्स इट एज अ स्ट्रेस, कि सडनली स्ट्रेस आ गया, अब मुझे प्रदूषित हवा सूंघनी पड़ रही है, इसमें सांस लेना पड़ रहा है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स क्या होते हैं, द फाइट फ्लाइट हार्मोन्स, और इनकी वजह से कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है? इफ वी कैन अंडरस्टैंड दीज फोर थिंग्स जो आपने हमें बताई हैं, फ्री रेडिकल्स, वेजोस्पैज्म, endothelial dysfunction, and now these stress hormones, now we will all understand कि एयर पोल्यूशन हमें क्यों तंग कर रही है, और फिर हमें पता चल जाएगा हमें इससे लड़ना क्यों है। So basically, again, stress hormones, we consider it as HPA axis, which is hypothalamus pituitary adrenal axis. So ये हमारे hormones जो basically दो systems में हम बना लेते हैं, एक sympathetic, एक parasympathetic. Sympathetic system हमको देता है प्रोटेक्शन, कि कोई खतरा आ रहा है तो उसके बचने का तरीका बताता है ये सिस्टम हमको। पैरासिम्पैथेटिक हमारे बचाव करता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम इज फियर फ्राइट फ्लाइट। तो इससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस सिस्टम। और जो हाइपोपिट्यूटरी एक्सिस है उसमें बाकी के हार्मोन्स हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इट इज अफेक्टिंग फ्रॉम हेड टू टो। सो उसमें हार्मोनल सिस्टम है जो अगेन दैट इज गोइंग टू लीड टू वेजोडाइलेटेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन जो होती है आपस में उसका मिसमैच हो जाता है, एंड इट लीड्स टू इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेंस आल्सो। So it is a broad term which is affecting the metabolism as such. वो हमारे सारे शरीर की वर्किंग को अफेक्ट करता है जब भी ये हार्मोनल सिस्टम में मिसमैच होता है, which is going to lead to dysfunction
लाइक डायबिटीज हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज में फर्क पड़ सकता है, हार्ट में हाइपरटेंशन या इंक्रीज्ड रेट या dysarrhythmias or arrhythmias. So these all will occur because of the disruption of hormonal system, which again, as we have discussed, this is HPA axis and sympathetic and parasympathetic system. सो थैंक यू सर, ये आपने इतनी सरलता के साथ एक्सप्लेन किया। अब हमें आइडिया हो गया कि एयर पोल्यूशन सिर्फ ये नहीं कि हमने थोड़ी सी खांसी कर दी और उसको भूल गए, और ये नहीं कि बस थोड़ा सा आंखों में दर्द हुआ और उसको भूल गए। ये एक्चुअली बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक सिस्टम को, हर एक सेल या कोशिका को अफेक्ट करता है, एंड इट इज नॉट वेलकम, इट इज नॉट समथिंग दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। सर, इसको नापें कैसे? इफ यू कांट मेजर समथिंग, लॉर्ड केल्विन ने कहा था, यू कांट improve it. तो सलोनी राणा जी पूछती हैं, how do air quality alerts and advisories help protect public health? And then how do I read an air quality alert? ये जो इतने सारे नंबर हैं, NO2, O3, CO, PM2.5, PM5, इनका मतलब क्या है? तो एक एक करके समझाएंगे सर प्लीज। सर, इनका मतलब है जो पीएम है, पीएम इज पार्टिकुलेट मैटर। सो बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस मैटर दो तरीके की चीज होती है जो आप कंसिडर करते हैं एयर पॉल्यूशन में। सो पार्टिकुलेट मैटर कैन बी ग्रुप्ड। ये लार्ज है, जो 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा है। कोर्स पार्टिकल्स हैं जो 2.5 से 10 माइक्रोमीटर्स तक हैं। और फाइन पार्टिकल्स हैं विच आर मोस्ट डेंजरस, उसको हम पीएम 2.5 भी बोलते हैं। जब भी आप देखोगे पॉल्यूशन रिलेटेड तो पीएम 2.5 के हिसाब से ही डिस्कशन होएगी। सो दैट इज जनरली लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स, और इसमें अल्ट्राफाइन और नैनो पार्टिकल साथ में आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द पीएम पार्टिकल्स। और इसमें अगर एयर पॉल्यूशन देखें तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स भी हैं, जिसमें NO2 इज नाइट्रस ऑक्साइड, sulfur dioxide and carbon monoxide and ozone. So these are the four gases which are very very important. और दूसरा ऑर्गेनिक एरिसोल्स होते हैं। जब हम यूज करते हैं कोई भी चीज, बेंजीन्स है, टोलिन है और पॉलीहाइड्रोटिक कार्बन्स हैं, सो दीज आर ऑल गैसियस पॉल्यूटेंट्स। सो टुगेदर दे मेक ए डेंजरस कॉम्बिनेशन, सो विच अगेन कैन बी आउटडोर पॉल्यूशन। हमने जो बात किया है वो आउटडोर पॉल्यूशन है, जो हम बाहर जाते हैं। बट हाउस होल्ड पॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी हम सोचते हैं कि WHO का ये कहना है कि 99% पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर पॉल्यूशन थ्रेट। सो उसमें एम्बियंट और आउटडोर पॉल्यूशन भी आ जाता है और इंडोर पॉल्यूशन भी आ जाता है। इंडोर पॉल्यूशन अगेन इट इज डिफरेंट इन रिच कम्युनिटी एंड इट इज डिफरेंट इन पुअर कम्युनिटी। पुअर कम्युनिटी में कंबस्शन ऑफ बायोगैस है, जैसे हम सब्जी बनाने के लिए या कुकिंग के लिए यूज करते हैं। वुड है, कोल है, स्ट्रॉ है, काउ डंग है, चारकोल है। और जो रिच हैं उनमें वुड बर्निंग स्टोव्स हैं, फायर प्लेसेस हैं, इंसेंस, कैंडल्स, एरिसोल स्प्रेज एटसेट्रा। सो इसको नापने का तरीका, जैसे एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें 0 to 500 तक हम उसको बनाते हैं। सो इट इज ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। रेड इज मोस्ट डेंजरस। सो दैट इज हाउ वी क्लासिफाई द एयर पोल्यूशन which can guide us that अगर PM 2.5 ज्यादा है या गैसेस ज्यादा है तो what we can expect our health to you can say react with। so हमारे बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो डिपेंड करता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स फ्रॉम 0 to 500 कितना है। so that is how we can judge the air pollution क्या कर रही है। तो सर, भटिंडा में जहाँ पे आप रहते हैं, वहां पे AQI कितना है आजकल? वो वहां पे इट इज मोस्ट हाईएस्ट इन पंजाब, दैट इज अबाउट 346। वो चढ़ती कहाँ पे हो तुसी? हाँ, पूरा अंधेरा है जी, 3-4 दिन से धूप नहीं निकली। एंड हियर आई मस्ट मेंशन दैट इन 2017 आई डिड द बिगेस्ट सर्वे इन्वॉल्विंग 9,000 पेशेंट्स। एंड you know what,
it was, startling effect that air pollution is doing to our this thing. And 87% of the population had some or the other effect, and most common was irritation in eyes, irritation in nose, irritation in throat. So that was the acute effect. And about 41% has cough and increased cough, and so and so forth. So that was a very important and largest survey which we did to know the effect of air pollution on our residents. सर, आपने बोला कि आपने 6 साल पहले ये स्टडी की थी 2017 में, तो बतूल गफ़ार जी पूछती हैं कि वी स्पीक अबाउट air pollution every year, every winter. So, her question is, how do weather conditions influence the dispersion and concentration of air pollutants? What happens in this weather? मतलब अब क्या हो गया कि 4 दिन से धूप नहीं निकली बठिंडा में? So again, very good question, because every time you hear in the news कि दिल्ली वाले बोलते हैं पंजाब से आ रहा है धुआं, हरियाणा वाले बोलते हैं पंजाब से आ रहा है, तो take action against them. So we all know that it पर cannot be that बठिंडे बठिंडे वाले हुंदे भी खाड़कू है. so we never know that how can Bathinda, where AQI is 340, can lead to 500 in Delhi. So there has to be something more in Delhi which cannot translate that Punjab is sending smoke to Delhi to for these conditions. So very good question. Three, four things affect. First is wind speed. If wind speed is more, then the clouds and smoke won't hang. It disperses over a large area and it dilutes the smoke concentration. Second is rain. If rain is frequent, let after 10 or 15 days rain is there, and rain is the best pollutant washing method. So it clears the environment. And third is dampness, or you can say humid environment, which creates smog. Smog is combination of smoke and water vapors, which again becomes very dangerous, and they hang in the lower atmosphere. So wind speed is very, very important. If there is wind speed is good, you won't find such smoke, and AQI will improve. And the direction of the wind also will take smoke to the other area where you can find more AQI than the basic area where the pollution is being generated. So these are the environmental factors which affect the AQI. सर, मैडम रेखा बटारा आपको गुड इवनिंग कर रही हैं और अली Good नज़ाकत evening. आपको सलाम कर रहे हैं. ये साहिल स्टीफन जी का क्वेश्चन लेते हैं जिन्होंने पूछा था इन द बिगिनिंग. सो साहिल had asked, how can we as individuals, how can we reduce our personal contribution to air pollution? So sir, maybe you can take this. If I'm a farmer, if I'm a businessman, different types, different walks of life, what can we all do? So basically, again, this question is asked time and again in different aspects, like diabetes education, control of diseases. Similarly, it is control of pollution also, where the role of governments, what I feel, this is my personal view, I may differ, every person can differ with me on this, but I think the government's role is much more than your personal things. But personal things are important to make it 100%. So if we take the individual role, individually we can burn less this thing. But again, economics occurs. I generally give the example of a cartoon which I saw 20 years back in Times of India. So I must mention here the compulsions of sometimes the population. So one person was sitting under a tree and he was cutting the tree and burning it to make rice. So a you can say activist came and he was sermoning him that if you cut the tree, what will happen? There will be no rain, and this thing after 50 years, your children won't enjoy the good weather and everything will be polluted, this and that. So after 5 minutes of sermons,
the person who was cooking asked, "Okay, gentleman, if I don't cook food today by cutting the tree, my next generation won't be there. I will die because of that." So those are the compulsions where, developed countries, they created this pollution when they industrialized, and now they are blaming the developing countries that you are creating the pollution and carbon footprints you should decrease, when they have already done that. So again, the farmers, I have talked to a lot of farmers. So it is not economically viable to lift the crop, to cut the crop, and to send it somewhere, or to use the other methods to diversify the crops, where government roles become larger than life. As individuals, we can have protection, and somehow we can plant trees, keep our roads clean. Grooming can be, indoor pollution, we can affect indoor pollutants. That good night, we don't put good night, we don't put kachua chap, incenses. And this is how now every rich person is using ACs. So again, AC is a type, creating type of air pollution. So how we can ask a person that you should sleep at night without AC? So it is a very complex question, but definitely all the stakeholders. We should not only say the government. We are the pressure group, as individuals, as community. So we should come out with a viable solution according to our own situation. We cannot apply the American standards, like in diseases also. We cannot apply the American guidelines in Indian setup. So I think there is no straightforward answer. It is a very complex thing, and all the stakeholders should get together and to find viable solution. But still, I believe the government's participation has to be proactive, has to invest money in controlling the pollution. Without investing money, like in healthcare, we are investing just less than 1%, and we are talking, more. So without investing money in healthcare including pollution control, nothing is going to happen, and we will see it increasing day by day. So if So, you if somebody has a specific question that how we can go for control of stubble burning or anything, we can discuss that. But it is still a very very complex question without any straightforward answer. इसका सीधा सीधा जवाब नहीं है कि क्या करना चाहिए, because everyone has their own compulsions. जो पर गरीब आदमी आपका या फुटपाथ पे बैठा है, वो लकड़ी जला के ही चाय बनाएगा, नहीं तो वो पर आपका आंसर सर काफी क्लियर है एंड इससे हमें अपने हक का हुकूक का भी पता चलता है वी हैव राइट्स टू अ क्लीन एयर बट हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता चलता है एंड व्हेन वी यूज बिल्कुल, द वर्ड बिल्कुल। हमें दैट मीन्स आवर पॉलिसी मेकर्स आवर प्लानर्स it also means all of us who are members of the public. What you have also said is that we have to be realistic. अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू है तो या तो आप विकल्प क्रिएट करें यू क्रिएट ऑल्टरनेटिव्स यस, विच आर अफोर्डेबल विच आर एक्सेसिबल उसके बाद आप क्रिटिसाइज करें फार्मर को या कोई डेली वेज लेबरर को अगर आपने कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं दिया उन्हें टू सर्वाइव टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग लाइक कुकिंग फूड तो देन यू कांट क्रिटिसाइज यस, सर हमारे डेफिनिटली। लिसनर लॉग्ड इन है वेरी सीनियर एंड very illustrious business leader of Haryana. His name is Mr. Lalit Kathuria from Sonipat. वो कहते हैं कि सोनीपत में AQI 425 हो गया है. And बिल्कुल, as businessmen, we can also contribute. We can contribute by reducing consumption of fuels. तो जहाँ-जहाँ पे possible है, आप जैसे अपना AC आप 21 डिग्री पे ना सेट करें, 24 डिग्री पे सेट कर दें. बीच-बीच में AC बंद कर दें. इन छोटी-छोटी चीजों के साथ भी, if everybody contributes, you can actually reduce emissions. डेफिनिटली, नो डाउट अबाउट इट। जुलेखा मैडम पूछती हैं जुलेखा आरा जी कहती हैं सर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड एयर पोल्यूशन एंड आर ऑल इंडस्ट्रीज द सेम तो अब जैसे फरीदाबाद है दैट इज द इंडस्ट्रियल हब ऑफ हरियाणा लुधियाना इज द इंडस्ट्रियल एरिया और द इंडस्ट्रियल हब ऑफ पंजाब तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प
अगेन वेरी गुड एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन. हमारे गोविंदगढ़ है एक पंजाब में एरिया जहाँ पे स्टील का बहुत बड़ा काम है. तो वहाँ पे पहले कोल बेस्ड और स्ट्रॉ बेस्ड थे फर्नेसेस. अब द गवर्नमेंट हैज डन फॉर गैस बेस्ड फर्नेसेस. So this is a very good option like CNG. ऑटोज में है, कार्स में है, CNG इलेक्ट्रिक कार्स हैं. So the industry which is coal based or it is some other fuel based could be converted to gas based, which will reduce the particulate matter. Maybe different type of gases may increase, but they may be less dangerous than more dangerous particulate matter as well as the carbon monoxide, etc. So one thing is we should change the biofuel, the fuel methods in industry for protection of environment. And it may sound difficult, it may sound unrealistic, but अगर सब इकट्ठे मिलके काम करें, all stakeholders, you can actually make a difference. And आज के लिए नहीं तो एटलीस्ट कल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली हमारी जनरेशंस के लिए, we need to do this. Yeah. कृष्णा कुमार जी ने पूछा था व्हाट आर द प्राइमरी रीजंस व्हाई शुड बी कंसर्न्ड अबाउट एयर पोल्यूशन. वो आपने आंसर किया सर. हेड टू टो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन. सर एक मॉडल होता है हेल्थ में, बायो साइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, which tells us about the determinants of health and also about the end results or the downstream results of health. तो आपने बायोमेडिकल बातें तो की कि पोल्यूशन से बायोमेडिकल इम्पैक्ट आता है, बट डज पोल्यूशन इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ ऑल्सो? जैसे अब स्मॉग है बठिंडा में, इज इट अफेक्टिंग योर साइकोलॉजिकल वेलबींग, योर सोशल वेलबींग? So again, when we are talking about hormones, so all these psychological things are basically hormone based. So हम कहते हैं कि खुशी वाला हार्मोन बन गया या सैड हार्मोन बन गया. So again, pollution is affecting that part of a thing also. And once you go out, you are expecting sunshine, good sunshine that will elevate your mood. And once you know that this smog is irritating my eyes, I have a nasal problem, again it will affect your psychological thing. And social, we cannot, like health being, it is physical, social, spiritual, and mental health. So they are all combined. Social also, when we go out, the physical health is being affected, but physical health is not separate. It is going to, you know, we need, we are affected economically also. Once economics are there, the business is down, I am spending more on health, unexpected expenditure is there. A person who was healthy is having heart attack because of pollution. That is again affecting our mental health. And once you hear, हिंदुस्तान में और है कि एक बंदे को प्रॉब्लम होगी तो दूसरा बंदा टेस्ट करवाने जाता है कि मेरे को प्रॉब्लम ना हो जाए. So again, that is affecting our mental as well as social health. And if we go for pollution, CNS effects, so that there is increase in dementia, यादाश्त में लंबे तौर पे, छोटे तौर पे, it is affecting our mental health also. And social health में तो होना ही होना है जी इसमें effect. सर ललित कथुरिया साहब एक गाना शेयर कर रहे हैं, हिंदी का गाना, जो जिसमें शुरुआत तो प्रेम लफ्ज से होती है और एंड में वो लेडी गाती है कि ना बाबा पिछवाड़े बुड्ढा खांसता. तो जब ये एयर पोल्यूशन होती है और खांसी ज्यादा होती है तो इससे भी सोशल इम्पैक्ट पड़ता है क्या रिलेशनशिप्स बिल्कुल पे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल. And basically after COVID, everybody coughing or sneezing, तो बंदा दूर हो जाता है कि यार मेरे को इसको कोविड ही ना हो. हाँ. So before COVID, it was very difficult to ask, all the people to wear mask. पहले मास्क का बोल देते तो नहीं नहीं डॉक्टर साहब मास्क क्या करना है जी. अब तो you will find most of the people with masks. That is So that one is way of one thing positive of post-COVID era, that you don't have to educate the people about mask. That is one very good thing. And sir, एक आपको सलाम आ रही है from a close friend of ours, Dr. Noor Aga Danish, who is from Kabul in Afghanistan. तो आपको काबुल से सलाम आ रही है. Thank you, thank you.
Welcome, Dr. Noor, and I'm just wondering, how is the pollution level like in Kabul? If you can write in the chat box for us, वहाँ पे pollution का क्या status है, sir? Dr. Siddharth, thanking you for all the wisdom that you are sharing with us, and he says, I am blessed to have joined this session today. Thank you. सिद्धार्थ इज ऑफ अ यंग एज और वहां पे खांसी के अलग मतलब होते हैं, तो क्वेश्चन टू सिद्धार्थ वुड बी, सिद्धार्थ, इफ यू आर विद समवन ऑफ योर एज ऑफ द सेम जेंडर, फिर खांसी का क्या मतलब होता है? एंड इफ यू आर विद समवन ऑफ द सेम एज ऑफ एन ऑपोजिट जेंडर, फिर खांसी का क्या मतलब होता है? अभी चल कहाँ चले? दैट द क्वेश्चन इज कहाँ? सर, so many aspects we have talked about. Mohini Batara ji पूछ रही हैं, and you have begun answering. How do we protect ourselves from pollution, especially sputum and cough? तो एक तो आपने masking बोली. Any other thing we can do as individuals? जैसे आप पहले बता रहे थे, saline gargles and steam is very good method to clear your throat, your nose as well as your lungs. So we can divide. हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं. एक तो पर्सनल लाइक मास्क. मास्क भी हमको चूज करना पड़ेगा, नॉट सिंपल कॉटन मास्क, इट हैज टू बी N95, जिससे पार्टिकुलेट मैटर कम जाता है. We cannot have the protection from gases, but we can have protection from particulate matter, bacteria, viruses. So that has to be very specific. N95 के ऊपर का मास्क हो, जो हम नॉर्मल कपड़े का मास्क लगाते हैं, इसमें कफ और स्नीजिंग के जो लार्जर ड्रॉपलेट्स हैं उनसे तो प्रोटेक्शन होती है, पर अदरवाइज प्रोटेक्शन नहीं होती. दूसरा, हाउसहोल्ड पॉल्यूशन, जो हमारे इंडोर पॉल्यूशन है, उसमें वी कैन इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी larger than life. So most of the times we are in our house, so we can protect ourselves. जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, तो it the dust, very fine dust comes into atmosphere. अगर हम झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा सा स्प्रे कर दें, वाटर स्प्रे, फाइन स्प्रे, so that will create the the उससे डस्ट सेटल हो जाएगी, विच विल नॉट कम इनटू एनवायरनमेंट. और एरिसोल्स हैं, अगरबत्तियां हैं, कछुआ छाप है, गुड नाइट है. सो ऐसे उससे हम बचत करते हैं. चद्दर झाड़ते हैं तो वी शुड हैव मास्क, सो दैट कैन डिक्रीज अवर हाउस होल्ड पॉल्यूशन. और दूसरा, गुड हेल्दी लाइफ. हेल्थ में रूटीन में अपने पेशेंट से कहता हूं कि आप हेल्थ को खरीद नहीं सकते कि 2 किलो हमको सेहत दे दो, 4 किलो सेहत दे दो. दैट यू हैव टू बिल्ड. एनी हेल्दी पर्सन विल बी ए बेटर इक्विप्ड to confront pollution than a weak person. So you must have regular exercise, good nourishing diet with lot of antioxidant, dietary antioxidant, not supplements basically. So natural diet, exercise, and control of risk factors like alcohol, smoking, obesity, they will go a long way for personally protecting against any pollution threat. थैंक यू सर. एंड इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सर ने कहा, इफ यू फील, मोहिनी मैडम, दैट यू आर प्रीडिस्पोज टू कफ एंड स्पूटम, तो सलाइन गार्गल्स कर सकते हैं. मुलट्ठी रख सकते हैं मुंह में. दैट इज, इट हैज एन एमोलिएंट इफेक्ट. एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई Yes, बीटाडीन गार्गल्स, डाइल्यूट बीटाडीन गार्गल्स. बीटाडीन गार्गल्स का फायदा होता है कि ये वायरस को भी मारते हैं, जो वायरस आते हैं, और बैक्टीरिया को भी मारते हैं. अब ऐसा नहीं है कि एयर पोल्यूशन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, बट एयर पोल्यूशन प्री डिस्पोजेज यू, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है yes. हमारी लाइनिंग की, वो कमजोर हो जाती है. तो कमजोर लाइनिंग में वायरस और बैक्टीरिया दोनों कई बार एंट्री मार जाते हैं. सर, लव ह्यूमैनिटी हमारे साथ लॉग्ड इन है. वेरी ब्यूटीफुल डीपी, वेरी नाइस नेम. तो लव ह्यूमैनिटी साहब पूछते हैं, एनी सप्लीमेंट्स और मेडिसिन स्पेसिफिकली, एंड आई रेड समवेयर दैट देयर आर एंजाइमेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. इनका कोई रोल होगा सर यूज करने का? नहीं नहीं, एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन है जिसमें पोल्यूशन हो रही है, आई नेवर बेसिकली एडवोकेट एनी सप्लीमेंट्स फॉर दैट. सो यू हैव नेचुरल डाइट. जैसे आपने मुलट्ठी बताया, अदरक वाली चाय है, यू कैन हैव मसाला टी और कावा है. देर आर लॉट ऑफ डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट वी शुड कंज्यूम. आई नेवर prescribe or suggest any supplements for that. So natural diet, exercise, good food, जैसे आंवले का मुरब्बा है, च्यवनप्राश है,
So those are the things which are immunity booster. Turmeric है हमारा, it is very good. नीम के पत्ते खाने का है या तुलसी का है. So these are very good home remedies which one should use, and they should consult their older people in house कि क्या करना है. तो उसके हिसाब से हम डाइटरी ले सकते हैं, but I don't recommend any synthetic supplements for that. वन सिंपल वे वुड बी टू लुक एट द प्लेट. जो आपकी प्लेट है, जो आपकी थाली है, तो Yes. इंडिया के फ्लैग में 4 रंग हैं. एंड डॉक्टर नूर को पूछते हैं अफगानिस्तान के फ्लैग में कितने कलर हैं. मेरा ख्याल 6 रंग हैं अफगानिस्तान के फ्लैग में. तो इसका मतलब ये है कि यदि आपकी प्लेट में 4 या 6 नेचुरल कलर्स हैं, जैसे भिंडी, साग, घिया, कद्दू, तोरी और गाजर, all these different colors. तो सर, your take on this. Supposing my breakfast is आलू वाले परांठे and मलाई and makhan. हाँ जी. Versus, on the other hand, somebody else has a plate of f- colored fruits, colored vegetables, colored salads. तो हेल्थ के स्टेटस के बारे में बताएं सर. So you have tied on very good question, answer. Basically, you have given me this concept of colored food plate also. So thank you very much. So that is, I am a very good learner. In fact, that is how you learn from interaction. So definitely, I interacted with a naturist food thing 20 years back. उसने मेरे को एक फार्मूला बताया था कि आधा कच्चा फूड आधा पक्का फूड होना चाहिए. So if you consume 500 grams of food in lunch, so 250 grams should be pakka food and 250 grams should be kacha food. Kacha food means it should be fruits, salads, sprouts, etc., which is not cooked, जिसको heat नहीं लगा है. So I generally talk this formula, and you have given the concept of plate, and you are a very good promoter of nutrition as a diabetologist. Also, I have heard your lectures. So that plate, if it contains all the ingredients, that is carbohydrates, proteins, fats in recommended amount, and adha kacha food, adha pakka food, I think that is the healthiest food, not paratha with makhan and things like that. So basically, that happens so many times. If you ask a person कि मैं जी पूरा फूड कंट्रोल करता हूँ, संडे को छुट्टी होती है, संडे को मैं पूरी या भटूरे खाता हूँ. So if you earn for 6 days and then you spend whole of your health on Sunday, so that comes to neutral. So दीपक जी you का should पॉइंट have लेते it. हैं. That is why we call it as lifestyle modification. मॉडिफिकेशन. So it is for lifestyle modification, lifelong modification, not episodically के मंगल बुधवार को ये नहीं खाना, शुक्र शनिचरवार को ये खा लो, ये permitted है. So diet plays a very, very important part in all aspects of our life. We take Deepak ji's point as well. Deepak साहब logged in है हमारे साथ. He says, sir, nothing tastes better than butter. तो बात तो सही है दीपक, but सब कुछ बैलेंस में, नियंत्रण में, within balance. हाँ, नियंत्रण में. You can take butter, still you have food, food proportions. So once you take butter, you have to sacrifice something. Yeah. नहीं तो मैं रूटीन में एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, आप किसी भी अच्छे होटल में जाके खाना खाइए, पर आप गेट तक जाते जाते आपके टेस्ट में वही आपका फीका स्वाद होना है, विच इज गोइंग टू रिमेन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ द डे. बट जो आप खा के आए हो उसके जो इम्प्लीकेशंस है, हेल्थ इम्प्लीकेशंस है, that will be long term, and you will land up with doctors again and again because of that taste. जो टेस्ट आपके मुंह में 2 सेकंड के लिए रहना है, it will not last. If you take butter, you take by watch, it is not going to remain more than 20-30 seconds. So for those 20-30 seconds taste, you are going to ruin your life. And you know, Deepak, कथुरिया साहब जो सोनीपत वाले हैं हमारे, he shares this Hindi song as well. बेबी को बेस पसंद है, तो यू नो बेस पे रहें. बेबी को भी बेस पसंद है, ज्यादा ऊपर नीचे ना जाए. And of course, this is in lighter vein. And Deepak ji goes on to say that you should reduce sugar also, not only butter, but Yes. also sugar. So thanks, Deepak, for sharing all this with us.
So you are the Doctor, best person to discuss what are the disadvantage of refined sugars. So it is coming up more dangerous than fats. right. Dr. Noor point out करते हैं that in the new Afghan flag there are two colors now, black and white, black calligraphy over white background. We can use this black and white concept also to tell people कि आप अकेले cooked foods ना खाएं, raw food भी खाएं. So raw and Right. cooked, that is a nice way of explaining to people. Sir, specific questions from Mohini Madam. Question is camphor steam. Is it good in cough? Any steam is good. I don't know about camphor because I am not a Ayurvedic sort of a person. So I have not read the evidence, but it is soothing, it is comforting. And if you take plain steam and camphor steam, I think you will be comfortable with camphor steam and you can take whatever steam you like. Feel comfortable. सर सुबोध कुमार शर्मा जी पूछते हैं कि कैन वी टेक फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, शुड वी टेक बिफोर द सीजन ऑफ एयर पोल्यूशन, शुड वी टेक ड्यूरिंग, खांसी जुकाम के दौरान मैं वैक्सीन लगवाऊं या उससे पहले या बाद लगवाऊं? नहीं नहीं, वैक्सीन तो उससे पहले लगवानी चाहिए, बाद में कोई फायदा नहीं है. बेसिकली इन इंडिया कंसेप्ट ऑफ अडल्ट वैक्सीनेशन इज नॉट देयर एट ऑल. So, because we are confronting as immunity of Indians is more, so we have seldom seen a person dying from flu in India, basically. Hmm. But if there are comorbid conditions like COPD, bronchial asthma, diabetes, then those type of vaccines are, very, very important vaccines. And I think the adult vaccination program should get importance in India to educate people that who will benefit from vaccines and who require it, like other treatments. Like we give aspirin and clopidogrel in heart patient and COPD, pneumococcal vaccine is very, very important. It can be life saving also. So it has to be taken before the disease. That is the whole purpose of vaccination. Once you have the problem, then there is no use of vaccination. It has to be before that season. बट शर्मा साहब को थैंक यू करेंगे फॉर रेजिंग दिस पॉइंट, क्योंकि जैसे जो लोग हाई रिस्क पे हैं, पीपल विद लंग डिजीज, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, द वेरी एल्डरली, तो इन सबको Yes, अगर हम अब एयर पोल्यूशन कई चीजें तो मैक्रो लेवल या मास लेवल पे की जाएंगी, द प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स विल डू, बट ये चीजें हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम सेकेंडरी इन्फेक्शन. तो yes, एक तरफ जैसे बीटाडीन गार्गल्स हो गए, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन हो गई. दीज आर सम थिंग्स वी कैन सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस टू रिड्यूस आवर रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस. Sir, Dr. Danish shares that Kabul is very cool in winter, and there is central heating system in the city. Warm water circulates in pipes throughout the city, and it makes the home warm. तो घर के अंदर गर्माइश रहती है, but many people cannot afford it as well. So during winter they have to burn wood and charcoal to warm their yes, homes, and yes, that also leads to a lot of air pollution. yes. But that is their compulsion. The air pollution will affect them after 20 years. If they don't burn wood, they will die the next day. तो ठंड से भी बचना है, so you have to find a Yes, balance. yes, Deepak ji shares that you can have devices as well to clean air. So you have air purifiers which you can put in the room. yes, definitely. So now This there are I very sophisticated air purifiers, and a lot of people are using it now. In fact, after COVID, the concept of air purifiers and oxygenators have come up very fast, and companies have improved the quality of air purifiers also. So we can try those, and before you buy a gym purifier, just speak to your neighbors, to your friends, and see which one is useful for your part of the country. There'll be different Yes, makes. Also, when you look at the air purifiers, you will note that they have different standards for Thailand and China and Indonesia, and they've got yes, different standards for India. They have diluted the yes, standards for us. So don't get hoodwinked. Make sure that yes. international standards are being followed. Thank you, sir. सर, इट्स बिन ग्रेट बीइंग विद यू. हमारा आज का टॉपिक था एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ. तो इतनी सारी चीजें हमें हेल्थ की पता चली, मगर इसी टॉपिक की बातें करते करते एक और चीज आई, एंड दैट इज एयर पोल्यूशन एंड हैप्पीनेस. तो चाहे आसपास एयर पोल्यूटेड हो, स्टिल यू कैन बी हैप्पी. Yes. And if you are happy,
the effect of air pollution will decrease. Yes. So you Sir, should take it in a positive way also. in a positive way. सर सब लोग जो लॉग्ड इन हैं फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड डॉक्टर दानिश फ्रॉम अफगानिस्तान, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, सबकी तरफ से आपको शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी कहना चाहेंगे. Batul is with us backstage. Batul, could you please show a certificate of appreciation for Dr. Vitull Gupta, please? Thank Thank you you, sir. very much, Dr. Sanjay and IJCP for giving me this platform to, take out our agenda of CSI as Pollution Council. We will be conducting a few programs, also awareness programs locally as well as nationally to highlight this issue of air pollution, especially pertaining to cardiovascular system, but for health as a whole. That is why instead of focusing only on cardiovascular system, I suggested we should talk about air pollution or because other pollutions like soil, water, then you get a bigger platform. But air pollution and health is very very important. It is affecting each and every person in a different way. Thank you Thank you, very sir. much. हमारा हक भी है, हमारा राइट है क्लीन एयर, बट हमारी Yes, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्लीन एयर, एंड वी शुड वर्क definitely. टुगेदर. थैंक यू सर Yeah, फॉर duty लीडिंग and फ्रॉम द फ्रंट. responsibilities, go hand in hand. So we cannot expect someone else to do our job when we are not doing our job. But we thank you, sir, and we wish all the best to you, to the Pollution Council of Cardiology Society of India, and सबको शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी करना चाहूंगा for having logged in with us today. हरियाणवी में Thank सर you. थैंक यू का लफ्ज नहीं होता, so the word is थारा भला हो, that is the phrase. थारा भला Okay. हो सर, and जय हिंद. Jai Hind.